Hello everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning. Am I audible? Yes, Am I ma'am. audible perfectly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो कल के क्लास में सबका एक क्वेश्चन था विच आई कुडंट आंसर दैट वाज रिगार्डिंग कितने मार्क्स होंगे सो दैट आई कैन गेट 1000 और समथिंग रैंक यू वर टॉकिंग अबाउट. So if you talk about rank up to 1000 or less than that, then minimum you need to score from 230 marks to 250 marks. ठीक है? For rank up to 1000. And for getting into any IITs in any branch, for that also you require around 150 marks. So this is the aggregate we can take for ourselves. ठीक है? If you are getting 150 marks, irrespective of whatever category you are, you will be able to get into any of the IITs. New one, I would say, with not CSE branch, I would say. For that, you need to score above 200. But yeah, any other branch you will get. So, if you really want to have a good branch in some, all the colleges are good. So, near about 200, you need to score. राइट 150 से 200 के बीच में हमें चाहिए मार्क्स. डन है. ओके सो आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स. तो कल कितने लोगों ने ट्राई किया है? तुम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया क्या? Yes, ma'am. Morning में किया था. ओके. Morning से. यस हर्षिका, एनी क्वेश्चन? ओके, नो नो क्वेश्चन. ठीक है. So we should start from the beginning. I will give you some time so that you can look at the question again and you can try doing it. After that, we will be doing it together. So this is your very first question. Take your time, read the question carefully first, write whatever things are given, draw the diagram, and after that, apply whatever concept you know. You can let me know answer in the chat section. Okay? Hello, ma'am. Yes. Hello. Anybody trying to say something? Who is this with name A? Please write your proper name, please. That will be quite helpful. There is somebody with such a long, some random things written. Please write your name. Your name is beautiful, I feel. It must be. Because you're carrying it for so long, right? With respect to man, नहीं. ये तो नहीं आएगा, सोहल. एक बार आप रीचेक करो. कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा हो, मे बी. ओके, आई विल राइट यू द आंसर. आंसर क्या है? ठीक है. आप रीचेक करो एक बार. Yes, Harshika, that's correct. Very good. Varun, you need to recheck. एक बार आप रीचेक करो, देखो क्या पता कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा हो. अदरवाइज मे बी कॉन्सेप्चुअल है ना. बट यू पीपल आर ट्राइंग, यू पीपल आर डूइंग, दिस इज ग्रेट. हमें ट्राई करना है, हमें करना है पहले. ठीक है. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग द राइट आंसर्स. दैट वोंट बी अ ग्रेट वरी.
Hello, Pragati. Harshita, yes, yes. I'm giving everyone enough time so that you can try. There is no rush. Should we now do it together? चलो ठीक है ठीक है. Let me read the question first to you. So question है क्या? There is a person of height 1.6 meter and this person is walking away from a lamp post. Lamp post meaning there must be some source of light, straight source of light. I mean there is some pole sort of thing. And this is of height 4 meter along a straight path on the flat ground. So there is a flat ground and on this flat ground you have lamppost of height, I mean lamppost is of height 4 meter. So suppose this is this, and then there is person. His or her height is what? How much? 1.6 meter, and this person is walking away. Then this is a source of light. Now, what is said? The lamppost and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of person is 60 centimeter per second, the speed of tip of person's shadow. ये कितने स्पीड से दूर जा रहा है? 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Gurmannat, it's not correct, but you are very much close to the answer, I'd say. So this is 60 centimeter per second. Done it. We have to calculate the velocity of tip of the shadow. Done it. अब देखो shadow बनेगा क्यों? This is the prime question. We have studied in class 8th or 10th. If you remember, there was a thing of casting shadow wala portion in mathematics. Done. So there is a source here, and this is the person. Also in ray optics, we have studied. So this region, if you talk about this region, so in this region, there will be light. There will be light, no shadow happening. Shadow will start from this position, right? So this position shadow will be forming here, and the rest shadow will get formed in different sense. I mean, that is not the question. So let's say here, this is the person head, that is tip of the person, and its shadow will be casting on the ground like this. Okay, so इसको मैंने बुलाया shadow. Now what will happen if this person is going in this direction, moving away, towards this shadow point will also move like this. But what will be its velocity? That is what we have to calculate. So we can take help of geometry, right? Let's say which is the thing here which is not moving, which is constant. So that is lamp post. So this is stationary thing. So we can consider it as an y-axis, and this ground we can consider as x-axis. So this is y-axis, this is x-axis. Coordinate system is fixed. Now distance of this tip of the shadow from the lamppost, let's say this is x1, and distance of this person from the lamppost, let's say this is x2. So with time, both x1 and x2 will change. We have to see what is this rate of change. यानी कि dx1 by dt हमारे पास दिया हुआ क्या है? dx2 by dt is already given, and this is equal to 60 centimeter per second. What we have to calculate? We have to calculate dx1 by dt first, but not exactly this one, because we have to calculate speed of tip of person's shadow on the ground with respect to the person. dx1 by dt is the speed of shadow with respect to the ground, because this x1 distance we are measuring with something stationary. X1 distance is not getting measured with respect to the person. So definitely dx1 by dt is the velocity of shadow with respect to ground. So if we know VSG and 60 centimeter per second is already given, we can easily calculate shadow ka velocity with respect to man. Because we already know velocity of man with respect to ground is how much? 60 centimeter per second. So let's take the help of geometry. यहाँ पे एक triangle है.
And we can see two triangles. One is larger one, another is smaller one. This is 4 meter of height. This is 1.6 meter of height. We can take the help of similar triangle wala property thing, right? So if you see here carefully, x1 by 4 will be equal to how much? In this triangle, if you look at, so this distance will become x1 minus x2. x1 minus x2 divided by how much? 1.6. So this is the diagram I already made for you people. So this is what we are getting, right? अब यहाँ से आप solve कर लो 1.6 को आप break कर दो. This will become 10 like this 4 and by 5 times by 2 times. ठीक है? I feel like सबका answer आ चुका होगा, है ना? Yes, 40 centimeter per second. But what's your name, dear? I cannot read it. I mean, क्यों तुम लोग मजाक कर रहे हो? Please write your proper name, please. So this is what, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखो 2x1 is equal to 5x1 minus 5x2. So 5x2 is equal to how much? That is 3x1. Now x1 x2 का relation मिल गया. Differentiate on the both sides with respect to time. Then we will get 5v2 is equal to 3v1. And x2 v2 is what? Velocity of man with respect to the ground. That is already 60 given. So this is this 3 into v1. So what answer we are going to get? v1 आया हमारा 100. So what is this 100? This 100 is vsg. This is 100 centimeter per second. We have to calculate what? Velocity of shadow with respect to the man. So how we can calculate it? अगर vmg को सॉरी VSG को अगर हम माइनस कर दें VMG से, then we will be getting this thing, right? क्योंकि VSG can be written as VS minus VG, VMG can be written as VM minus VG, right? So do that thing. That will give you answer equal to 100 minus 60. So correct answer will be how much? 40 centimeter per second. Clear? Everyone clear with this answer? Yes. Yes, Sohel. Let me know. मैम वॉइस कमिंग आवाज आ रही है Is my voice coming, ma'am? Sorry, you're not audible to me perfectly. Can you write your query? I will wait for you. Anyone else? You can write your things in the chat section also. Okay. ठीक है. ऋषभ, ठीक है. That won't make difference ना. x2 as a distance of t shadow from person. तो वेरिएबल ही आपने चेंज किया ना. आपने सिर्फ वेरिएबल ही चेंज किया है, राइट? मैंने उसको x1 लिया, आपने x2 ले लिया, तो सेम यू विल गेट, राइट? या बिकॉज कॉन्सेप्ट आपने सही यूज किया है ना. यस प्रगति. Yes, so that's great. I will share the notes after the class. Just after the class, I will share it in the group. Okay? You don't need to worry about notes and all. Pragati, is it done? I want to solve as many questions as we can. Thank you, thank you, thank you. चलो, now take your time to do this question. सभी लोग प्यार से करो, ठीक है? क्वेश्चन को प्यार से करने का मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, गिव योर अटेंशन टू इट. After that, whatever you know, first draw the diagram. ठीक है? Read the question, draw the diagram, then try thinking what things you can apply. This is how you proceed. ठीक है? So take your time and do it. I'm giving you 4 or 5 minutes. 5 minutes I will give you. Don't worry. You can send your answers in the chat section.
Anyone here from JNB? If yes, then please let me know. Because I feel like it's not correct. Yeah, in integer. Okay. Uh, no, that's not correct, I guess. Actually, I forgot the answer. That is, can you tell me? Uh, no, that's not correct actually. Yeah, Harshita. Sorry. Pragati. Yes, Harshita. It will be around that. Pragati. Yes. Actually, this came long back. So back then, you were supposed to write the exact thing because it was back then. People used to write answer on the seat. So yeah, Harstika. Yes, that's great. Pragati, exactly what you're getting. Yes, Sohil. If you are rounding it off, then yes. Harsika, that should not be zero, right? Point, whatever you have written, that should not be zero. Reserve, no. Okay. Yuvraj, you have written in fraction form. Can you write it in point form? Yes, Harsika, you are right. So Yuvraj, actually you're getting right answer. I mean, you will solve it, you will get the same thing. So that's correct. ऋषभ, आपका डिफरेंस काफी ज्यादा आ रहा है. Can you recheck? Yes, yes, yes. That will be the thing. Everyone else? Anyone facing more problem? I feel like now we should do it together. Okay? Because it has already been 5 minutes. So let's first read the question. There is a projectile fired from horizontal ground with a speed v and projection angle theta. So what we are doing, we are firing a projectile with initial speed v at an angle theta. Okay? When the acceleration due to gravity is g, the range of projectile is d. So when acceleration due to gravity is g, then in this case, range is given as d. Now, what is happening if at the highest point in its trajectory, the projectile enters a different region? So, in actual case, what is happening? It's getting thrown like this. At the highest point, there is one change happening. Change is happening in the gravitational field value.
So gravitational field is becoming G by 0.81, right? So in this case, it is said that range is ND. So in this case, the range is given as N into D. And it is asked what will be the value of N. How we are going to solve it. So you just see here, what will be the, okay, yes, Sachidanand, थोड़ा सा मिस्टेक है, सही से देखो, मे बी कैलकुलेशन में किया है तुमने. तो अगर आप डी को ध्यान से देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑलवेज आई प्रीफर राइटिंग रेंज एंड यस ऋषभ, रेंज, जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या लिखते हो? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. आई राइट इट लाइक 2 ux uy बाई जी. ठीक है, टाइम पीरियड को मैं ऐसे लिखना पसंद करती हूँ, 2 uy बाई जी. और मैक्सिमम हाइट को हम कैसे लिखते हैं? uy स्क्वायर बाई 2g. व्हाई इन दिस वे आई एम राइटिंग? Because if you look at time period and maximum height, it is solely depending on y component of velocity and on acceleration due to gravity. Range is depending on both components, right? So initially d value is equal to how much? 2 ux uy by g. Okay. In the another case, what is happening? In another case, up to this point, everything is fine. Yani ki maximum height reached in this case h. h को आप क्या लिखोगे? h will be same as uy square by 2g, है ना? g ही रहेगा. Done. Because up to this, up to highest point, acceleration due to gravity is small g, right? So maximum height reached is this one. At this point, what is happening? There is a change is happening. G is becoming g by what? G by 0.81. So अगर आप इसको डिफरेंट केस की तरह ही रीड कर लो, जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, इफ देयर इज अ सर्टेन बॉल एट सर्टेन हाइट and if it is thrown with certain horizontal velocity, then it goes on like this. पढ़ा है ना हमने? Here the same thing is happening. At this point, it has only one component of velocity, ux, because it's at the highest point, and it is at a height h, and after that, it is being thrown like this. Done. So for this case, what will be the time period? Because हमें ये पता है यहाँ तक तो distance d/2 है. अगर तुम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल याद करो, जैसे इन दिस केस, अप टू हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इज हाफ ऑफ द रेंज, एंड इन नेक्स्ट half, next d/2 will get covered. Then because motion is quite symmetrical, then so this is d/2. Our task is to calculate this distance. So this we can calculate from this concept. है ना? We can treat it like there is a projectile at height h being thrown with horizontal velocity. अगर आप लोगों को याद हो तो इस केस में हम करते कैसे हैं? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगी. तो टाइम पीरियड इज सिंपली रूट अंडर 2h by g. यस, करेक्ट. सो रूट अंडर 2h by g करोगे आप. यहाँ से चलो हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा था, सो दैट इट विल टेक अस लेस टाइम. सो 2h by g करोगे तो g डैश लिखोगे. जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, अभी मैंने g लिख दिया. यस सच्चिदानंद, करेक्ट. तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, g लिख दिया. g डैश लिखना चाहिए ना मुझे, क्योंकि यहाँ पे g डैश है. डन है. तो आप प्रॉपरली लिखो. h का वैल्यू पहले जैसा था, uy स्क्वायर बाई 2g and 2 into this divided by g dash. If you will calculate it, you will get time of flight like this. So once we know time of flight, we know कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है. This is this time. And what will be d dash then? So d dash will be simply equal to time of flight into ux, right? So if you calculate it, d dash t into ux, so t कितना था? uy by g into 0.9, so this much. Now new range will be what? d/2 plus d dash. So d/2 plus, इसको मैंने d/2 लिखा. देखो हमने रेंज को क्या लिखा था, d को क्या लिखा था, अगर तुम्हें याद हो, ux uy by g ऐसा लिखा था ना. so यहाँ ux uy by g you can see here. So this is equal to d/2 into 0.9. So our answer will be 1.9 by 2 into d, 0.95 d. Then uy ux लिखने से एक आसानी और होती है कि we are not always writing cos theta sin theta. देखने में थोड़ा लेंदी लगता है, डन है, और क्लैरिटी भी थोड़ा कम होता है. So this is how we can do this question very easily, है ना?
हमें कुछ नहीं करना था, जितना कॉन्सेप्ट तुम अभी तक पढ़े हो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना था, एंड बाय यूजिंग दैट वी विल कम टू द आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है? एनीबडी मैम हैविंग वो एनी? पॉइंट मैम 0.81 का रूट 0.09 आएगा ना? 0.81 का रूट 0.9 आएगा ना? 81 है, 81/100, so this is how much? 9/10, right? So that is 0.9, है ना? Yes. Am I wrong? Anybody? मैम वो तो 0.8 से ज्यादा हो जाएगा ना, 0.9 तो। 0.9 0.8 से ज्यादा हो जाएगा, हाँ। नहीं, दिस इज 81, राइट? 81/100 का रूट करोगे तो क्या होगा? 9/10 होगा ना? आई एम नॉट गेटिंग यू, perhaps you are talking about calculation or some concept thing. मैम 0.81 का रूट उससे ज्यादा कैसे हो सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 0.81 का रूट 0.9 नहीं होगा, आप ये कह रहे हो? यस मैम। कैसे? यू आर गेटिंग मी कंफ्यूज नाउ। 81 को क्या लिखते हैं? 81 को 9 × 9 लिखते हैं ना? यस। कोई हेलो। और? 1 से छोटे का जो रूट होता है वो उससे बड़ा आता है, उन्हें ये नहीं पता शायद। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी है पॉइंट में है तो उसका रूट उससे ज्यादा आता है। जैसे अगर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 0.04, 0.04 का रूट क्या आएगा? 0.2, तो ज्यादा आया। यहाँ 0.81 है, 0.81 का रूट कितना आ रहा है? 0.9, तो 0.9 इज ग्रेटर देन 0.81। यस मैम, वो कंफ्यूज हो गए कि रूट किसी का बड़ा कैसे आ सकता है। अच्छा, नहीं लाइक वो आता जनरली है तो ना। 4 का रूट 2 आता है ना, तो लाइक छोटा ही होता है, बट 1 से छोटे हाँ केस में बट वो अपोजिट बट होता है। हाँ हाँ हाँ, बट ये पॉइंट में है ना, तो बाई 100 का अब बाई 10 हो जा रहा है, समझ रहे हो? आई यस मीन मैम, यू सही है। डोंट हैव टू गो दैट डीपर, यू सिंपली देखो, बच्चा बन जाओ। देखो 81 है, 9 × 9/10 × 10 है, रूट करेंगे क्या आएगा? क्या आ रहा है? करेक्ट जो आ रहा है लिख दो। इतना डीप क्यों जाना? क्या क्यों सोच रहे हो यस इतना? मैम, ये तो समझ में आ रहा है कि जैसे आपने अभी किया 81 का कर लिया, लेकिन वो मेरे को जब अजीब लग रहा था कि उसका रूट बड़ा कैसे आ रहा अच्छा, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? है। यस मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आई वुड से, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Everyone take your time, I will give you time, and do this question.
हो रहा है सबका? Okay, so I feel like it's correct or not. I don't remember the answer exactly, but yeah, it feels correct. Let's see. I will show you the answer after 1 minute. Okay. Yeah. We got one more answer. Yes, Harsika. Everyone getting the same. It feels like it's correct, है ना? चलो देखते हैं. I will reveal to you the answer first. Everyone done with the solving? Jatin, Krish, Lavanya, Mayank, Raj, Ranjan, Rashmi, Rishabh, Sohil. Sohil, you gave me the answer already. Varun, it feels correct because everyone is getting the same. How can everyone do the same mistake? Isn't it, quite interesting? Everyone can do the same correct thing, but not everyone can do the same mistake. So mistakes are always more a diversified thing, I would say. है ना? Yes. Let's check now. Answer दिखाती हूँ पहले कितना है. So yes, everyone has got the correct answer. अब देखो क्वेश्चन क्या था. There is a ball. We are throwing it from the ground at certain angle. For some time it is in air. Just like projectile, it is landing. And upon the landing, collision is happening. And collision is inelastic. And that is why velocity is changing to initially when it was thrown from with velocity u. Finally, when it hit the ground for the first time and again bounced back, its velocity become u naught by alpha. Again, this time also it will decrease by 1 by alpha. So u naught by alpha square. And here it will be u naught by alpha cube. So like that. We are asked average velocity. No. Average velocity in the entire duration is given 0.8 v1. We have to calculate value of alpha. v1 is what? v1 is the average velocity when the ball hit the ground for the first time. Then, so how we will calculate average velocity? When ball is starting from here and finally it will stop somewhere here. So what is the displacement? Average velocity हम कैसे लिखते हैं? Average velocity is simply displacement by time. So what is the displacement? Displacement will be sum of all ranges. है ना? This is R1, this is R2, this is R3. Done. And what will be the time taken? Time will be your, I mean, we can also talk like this. Average velocity for the first case will be how much? It will be your R1 by T1. Okay. For second case, it will be how much? R2 by T2. And for third case will be how much? R3 by T3. Done. And when we will add it, we will get the value of overall average velocity, right? How you will calculate R1? Range हम कैसे निकालते हैं? We already know the formula. Range is what? 2ux uy by g. And what is time period? Time period का general formula is 2uy by g.
अगर आप r by t करोगे ना, what you are going to get, r by t कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, g will get cancelled, 2 will get cancelled, uy will get cancelled, only remaining thing will be ux. So for the first case, ux will be how much? U cos alpha. So r1 by t1 is u cos alpha. r2 by t2 will be how much? U by alpha cos, चलो इसको थीटा लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, u by alpha cos theta. r3 by t3 क्या होगा? u by alpha square cos theta. ठीक है, so that thing we will do. यहाँ पे देखो मैंने सेम चीज किया, you will get this if you're going to put the values. So this is just like a geometric series, or just like what it is, geometric series. So u cos theta you are taking as a common, and this is this thing. इसको add करेंगे कितना होगा? This is an infinite series, right? And formula is what? First term, that is 1 divided by 1 minus r. R is what? 1 by alpha. So this is alpha by alpha minus 1. So u naught cos theta, alpha by alpha minus 1, average velocity. And in the question, how much it is given to be equal to? 0.8 v1. Okay, so this is equal to 0.8 v1, and v1 is what? v1 is average velocity in the first case, when the ball is hitting the ground for the first time. So that is equal to r1 by t1. So that is u cos theta. So u cos theta is nothing but equal to v1. So this is v1. यहाँ से v1 cancel हो जाएगा, and you all must have got the answer. So you all got 4. Everyone done with this, or anyone is having any doubt? किसी को doubt है? No, I feel like चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा बता देना. Now let's do this question. Most of the questions are PYQs. Take your time, do it. Please read this question more carefully. ठीक है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जेई एडवांस में. मैंने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा थॉट बेस्ड है. आई मीन यू हैव टू इन्वेस्ट मोर इन थिंकिंग. आफ्टर दैट यू हैव टू गेट इनटू कैलकुलेशन. कुछ ही क्वेश्चन है जहाँ पे कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, अदरवाइज थॉट इज वर्किंग मोर. Okay, I got one answer, Harsika. Yeah, it is correct. Yes. Very good. Chaitanya, is it happening? Priyansu? यस मैम, ये करा हुआ है क्वेश्चन. अच्छा, करा हुआ है पहले से. ओके, दैट्स गुड. चलो ठीक है. ओके, प्रगति.
Everyone else got it? Yes, Mayank, correct है. चलो लेट्स डू इट टुगेदर नाउ. क्वेश्चन क्या है? इसमें कैलकुलेशन तुम्हें बहुत ही कम करना है. देयर आर टू एयरप्लेन्स, ठीक है, A and B, and they are flying with constant velocity in the same vertical plane at an angle 30 and 60 degree. ठीक है, एक 30 डिग्री दिख रहा है, दूसरा 60 डिग्री. With respect to the horizontal respectively as shown in the figure, the speed of A is given. This is flying with what speed in this direction? 100 root 3 meter per second. At time t is equal to 0, an observer in A. So there is observer sitting in A. Done it? And what he or she is finding, if he or she finds that B is at a distance of 500 meter. And also another observation is that this observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. This is very interesting result. जो भी observer A के अंदर बैठा है, he or she finds that B is moving perpendicular to the line of motion of A. So A पे अगर मैं perpendicular बनाऊं तो कुछ ऐसा डन है. यानी कि इससे पैरेलल लाइन ऐसे खींच लो. डन है. So B moving with constant velocity perpendicular to this. So to an observer sitting in A, B feels like it is moving in this direction. Done it? We are asked at t equal to t naught, A just escapes being hit by B. T naught value is how much? If you look at this thing carefully, we are observer is sitting in A and it is observing whom? B. So everything of B is getting observed from A. Done it? And velocity of B with respect to A has to be in this perpendicular direction. क्योंकि observer in B finds that A is moving towards it perpendicular to its own line of motion. So इसका observer का line of motion ये था. B उसको अपने से perpendicular आता हुआ दिख रहा है और कितने separation पे दिख रहा है? 500 मीटर पे. What does it mean? इसका मीनिंग सिंपल है, VBA is in this direction. डन है. सो हाउ वी विल सॉल्व इट? सिंपल है, देखो हमारे पास टू मैम डॉट कोऑर्डिनेट. प्रोडक्ट जीरो करेंगे. सॉरी, मैम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल के ए से डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे ना. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल कर क्या करोगे? हाँ, वो डॉट मैम प्रोडक्ट. वेलोसिटी ऑफ हाँ, ए कर से सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट. हाँ और मैम एक और तरीका हो सकता है कि इसके बाइसेक्टर के अलोंग ले लें, 30 डिग्री पे रिजोल्व कर देंगे फिर इसको. हाँ, रिलेटिव कॉन्सेप्ट को इजिली यूज कर सकते हो. मैं वही करने जा रही थी. आई मीन मैं इसलिए उस मेथड से जा रही हूँ सो दैट यू कैन सी थिंग्स मोर क्लियरली रिलेटिवली. ठीक है. जैसे एक काम करती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया तुम्हारा, एक लाइन ये ले लो, दूसरा लाइन ये परपेंडिकुलर वाला लाइन हुआ. ठीक है. सो बी की वेलोसिटी इधर है ना, इस डायरेक्शन में है बी की वेलोसिटी. लेट्स से दिस वेलोसिटी इज वीबी. ठीक है. नाउ माय एक्स एक्सिस इज दिस वन एंड वाई एक्सिस इज दिस वन. व्हाई आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन? क्योंकि ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी मूविंग इन दिस सेंस. सो एक डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस ये हुआ तो एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये वाला लाइन. अब आप ध्यान से देखो, बी की वेलोसिटी इधर vb है. vb will have component along I mean how much angle vb will make with this line? कितना एंगल बनाएगा ये? एंगल बताओ कितना हो? yes, how much will be this angle? मैम मैम 60. 30 डिग्री. 30 डिग्री. क्यों? क्योंकि दिस लाइन, दिस आई मीन ये लाइन और इसके बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री है. 30. ये this is this line and this is perpendicular to this line. So this line also, I mean this angle will also 30 degree. Geometrically you can see it. So VB has two component, one along the y-axis, that is your VB cos 30, and another is along the x-axis. X-axis यहाँ हमने बनाया है, इसको parallelly यहाँ पे बना लो.
सो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ भी होगा कितना, वीबी साइन 30, एंड वीबी साइन 30 ए के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, क्योंकि ए देख रहा है बी को वाई की तरफ जाता हुआ, इसका मतलब ए देख रहा है बी का एक्स की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, राइट। अगर ए को दिख रहा है कि बी वाई की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि बी का एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब बी का एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी ए का भी एक्स डायरेक्शन में, राइट। अगर दो चीजें हैं दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों का उस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब क्या, दोनों की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में सेम है। सो वीबी साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100√3। ठीक है, तो यहाँ से आपको वीबी का वैल्यू मिल जाएगा। सो वीबी इंटू हाफ विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 100√3। ठीक है, सो यहाँ से आप वीबी का वैल्यू निकाल लो, दिस इज हाउ मच, 200√3। नाउ व्हाट विल बी द टाइम टेकन, सो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीबी cos 30। आप वीबी cos 30 निकाल लो, कितना है, दिस इज 200 इंटू √3 बाई 2, इंटू √3 ऑलरेडी था, सो दिस इज हाउ मच, this is your 300, and this distance was how much, 500, right? So 500। हाँ, अगर आप टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड करोगे, राइट। डिस्टेंस कितना है, 500 एंड दिस इज 300। They're getting it wrong, right? ये मैम 100√3 थोड़ी आएगा एक्स की तरफ, मैम वहाँ मैम वो 60 कंपोनेंट डिग्री लेना आएगा, पड़ेगा। 30 डिग्री। कुछ गलत किया है, एक सेकेंड रुक जाओ, गिव मी, वहाँ 60 डिग्री होगा मैम बीच में। क्या गलत गया, एक की भी एक्स 60 कंपोनेंट कैसे वाली आएगा? वेलोसिटी लेंगे ना मैम, साइन हम एक की भी एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी कंपेयर करेंगे ना। नहीं ए तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, दैट इज ऑलरेडी इन मैम वो एक्स एंगल डायरेक्शन। गलत ले लिया हमने, एंगल गलत एंगल लिया क्या, 30 जो हमने एक्स एक्सिस मानी है वहां से 30 बनेगा। अच्छा एक सेकेंड, लेट मी इरेज एवरीथिंग, एंगल गलत था क्या, जैसे इसको मैंने एक्स एक्सिस माना था, ये था तुम्हारा वाई एक्सिस 90 डिग्री, ये था तुम्हारा इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन वीबी। मैं कह रही हूँ वीबी इसके परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल हमें पता करना था। दिस इज 60, दिस इज हाउ मच 30, और दिस इज 30। अभी सही कर ये तो नहीं, देखो फिर से 120 आ जाएगा ना मैम। सॉरी सॉरी, देखो आई एम ग्रेट एट डूइंग मिस्टेक्स, तो तुम लोग ध्यान से देखना एक बार, 120 होगा ये ऑलरेडी 90 है, सो हाउ मच विल बी दिस एंगल, this is 90 30 120 120 240, and again that is 120 होगा 120 है। 120 होगा, and this is 60 डिग्री एक्चुअली, है ना, हमने वही मिस्टेक किया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। अब मैंने ये सिंपल बोला था कि ए तुम्हारा इधर जा रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, ये वाला लाइन है, ए को क्या लग रहा है, बी किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और बी की वेलोसिटी थी ओरिजिनल इधर, ठीक है। तो अगर ए को दिख रहा है बी इधर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बी का जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, इसको मैंने माना था एक्स एक्सिस। सो अगर ये थीटा है तो इधर की कंपोनेंट कितनी होगी, वीबी साइन थीटा। सो वीबी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी ए, मैं ये कह रही थी। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ए को दिख रहा है बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। So relative velocity in x direction has to be 0, and that is why I've written vb sin theta va. So यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे vb sin theta कितना होगा, sin 60 is your √3/2, va is how much, 100√3, so this vb is how much, that is 200. Now ये डिस्टेंस कितना था, 500, और ए को बी जस्ट हिट करते हुए बच गया एट टाइम टी नॉट, इट मीन्स द टाइम इन विच इट विल कवर 500 मीटर। सो अगर आप टी नॉट निकालोगे तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो नो दैट स्पीड विल बी 200 cos 60, राइट, सो दैट इज हाफ। अगर ऐसा करोगे तो कितना आएगा, 5 सेकेंड। वीबी cos थीटा लेना है ना, क्योंकि इधर वेलोसिटी कितनी है, बी की
वीबी कॉस थीटा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि रिलेटिव स्पीड हैज टू बी इन द वाई डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया। दूसरा मेथड ये भी था कि हमें दिख रहा है बी का स्पीड, आई मीन रिलेटिवली बी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, यानी कि बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ए के वेलोसिटी से क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है। सो डॉट थिंग आल्सो यू कैन डू, but I feel like this is more easier. Yes, Sachidanand, thank you. I couldn't see your message. Yes, soil angle 60 hoga Ram. Yes. Done it? Everyone correct? Everyone done with this thing? Sorry, I messed it up with the angle. तो मैम मैं तो डॉट प्रोडक्ट वाले से कर लेता हूँ, वजन नहीं होती एंगल की। हाँ ये तो है, बट एंगल भी क्लियर दिख रहा था मुझे। एक्चुअली आई लव यस मैम। रिलेटिव थिंग, बट ठीक है वैसे भी जा सकते हो, मैम इट्स फाइन। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो क्यों होगी? जीरो इसलिए होगी क्योंकि देखो, अगर जैसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ वीए बी, पहले तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू बी तुमने कहा ना, तो तुमने मान लिया कि बी रेस्ट में है, ठीक है, बी रेस्ट में है, और तब तुम देखोगे कि ए कैसे मूव कर रहा है। डन है। हमारे क्वेश्चन में ये बोला था कि ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए को हमने क्या मान लिया, ए को हमने मान लिया रेस्ट में। सो ए जब रेस्ट में है, तब उसको बी किधर आता हुआ दिख रहा था, उसको बी इधर आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का रिलेटिव वेलोसिटी इसके इस डायरेक्शन में जीरो है। सो बी का भी वेलोसिटी जितना इधर होगा उतना ही ए का इधर होगा, तभी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी ना एक्स डायरेक्शन में। समझ रहे हो? यस अगर मैम। अगर दो दो इंसान की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसका सिंपल मतलब ये है कि दोनों की स्पीड उस डायरेक्शन में क्या है, सेम है। और हमारे क्वेश्चन में बस स्पीड इधर ही दिख रहा था, इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है ए के वेलोसिटी से। ठीक है, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज इजियर वन। ठीक है, अभी तुम लोग इसको मैम वो फास्ट जो कर। लास्ट वाला क्वेश्चन था, हाँ हाँ, ये वाला। ये जो मैम आपने ऐसे करके एंगल लिया है इधर से, हम्म। इसको मैम सीधा 60 का बाइसेक्टर नहीं ले सकते? 30 30 फिर तो वो सीधा आ जाता ना 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर वीवी कोस 30 मैम हमारा 100√3 के इक्वल आ जाता, 200 आ जाती है हाँ वीवी। ये ऑलरेडी 30 था ये। हाँ सही यस कह मैम। रहे हो, ये तो ऑलरेडी 30 था क्योंकि ये वैसे ही लाइन भी करा तो था था। मैंने। हाँ एग्जैक्टली, मैं मेरे दिमाग में वही चल रहा था और एंगल मैंने यहाँ रख दिया था एक्चुअली। यस मैम वही मैं सोचा। हाँ सही सही कह रहे हो, उतना करने की जरूरत नहीं थी हमें। गलत हो गया ना, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक पे चली गई थी। चलो, थैंक यू। करते, दिस इज इजियर वन, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। ओके, यस, वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट गिवन, आपको आंसर ए और बी के टर्म में ही लाना है। ठीक है, सो दैट्स नॉट गिवन। यस, दिस इज अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन बेसिकली। So, I mean, back then you were supposed to write answer on answer sheet. So, yeah, this is value is not given. Yes. Okay. Angle fills. You need to recheck your calculation. एक बार check करो.
दोनों ही गलत आ रहा है। Maybe angle wala thing is correct, but that height one is not correct. Yes. Pragati. This is what? Okay. Again, now for calculating maximum height, put this value of x in the equation. Equation में आप put करो, ठीक है? Yes, Rishabh, it looks correct. Yes, Pragati. If you will put in the equation, you will get the value of maximum height. Everyone just use the concept how you calculate maximum of any function. ठीक है, Harsika? Yes, correct. Very good. चलो, I feel like now I should solve it. क्योंकि काफी easy question है. Let's look at it. Trajectory of a projectile in a vertical plane is given like this: y is equal to ax minus bx square. ठीक है? Maximum height attained by the particle and angle of projection. So equation of trajectory का एक general formula होता है, सबको पता होगा, y equal to x tan theta 1 minus x by r. This is the general formula. अगर इस जनरल फॉर्मूला में आप इसको पुट करोगे, जस्ट टेक ax एज कॉमन, देन यू विल गेट 1 माइनस b बाई ax, राइट? सो फ्रॉम हियर ax देख रहे हो, a किसके बराबर है? tan थीटा इज इक्वल टू a. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a. डन है? ठीक है? यस, सोहेल, इट्स करेक्ट. Now, how you will calculate maximum height? So, maximum of any function के लिए, first we differentiate function with respect to the variable. If you are going to do this, what value you will get? A minus 2bx. We equate it to 0. X is equal to a by 2b. Since we are getting only one value of x, no need to worry about it. Simply put this value into the equation. So, y का value क्या हो जाएगा? A into a by 2b minus b a by 2b का square. If you solve it, you will get the answer. ठीक है? So this was your answer. Now let's do this question. सही से सोचो, समझो और करो. Take your time, do it. मैम ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिफरेंशिएट करके नहीं करा था, दूसरे तरीके से करा. Sorry, differentiate करके नहीं आया? नहीं मैम, मतलब मैं दूसरे तरीके से करा था. मतलब वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, हाँ हाँ. उससे मैम मैंने इसकी वैल्यू निकाली और जो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है उसमें डाल दिया. वैसे करके भी आ रहा है यही. हाँ, वो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो x का वैल्यू रेंज के हाफ होगा. क्योंकि यहाँ से रेंज भी हमें मिल जाएगा, है ना? That you can also ये do, but बी बाय ए होता है ना ऐसी इक्वेशन में, रेंज कि ए बाय बी होता है.
देखो यहाँ पे जनरल इक्वेशन ये है, तो रेंज तो तुम्हारा यहाँ से a बाई बी हुआ। ओके, ए बाई। हम्म। सो वो भी कर सकते हैं, बट वो ज्यादा लेंदी होगा यहाँ पे इजीएस्ट तो ये होगा, है ना। ये कह रहा है कि रेंज का वैल्यू, जैसे इक्वेशन दिया हुआ है ना, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालना था। अगर प्रोजेक्टाइल में जाओगे तो मैक्सिमम हाइट पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, रेंज का हाफ होता है। और जनरल इक्वेशन से हमें समझ में आ गया रेंज कितना आ रहा है, ए बाई बी। सो जब वाई मैक्स होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए बाई टू बी। सो सिंपली सेम ही आ रहा है ना, सेम वैल्यू फिर हमने पुट किया ए बाई टू बी। हाँ सेम है, कर सकते यस। हैं, सेम ही है। डन। ओके आयुष, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द आंसर, आई विल लेट यू नो इन सम मिनट्स, ठीक है। यस, प्रगति, somebody, everyone getting different answers. Yes, okay, Rishabh. Everyone is getting different answers. I don't know which one is correct. I'm just giving one more minute so that you can look at your calculation and check. Okay, let me show you the answer now. So पहले मैं आंसर दिखा दूं। आंसर इज दिस। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, लेट मी चेक। वन करेक्ट आंसर आई गॉट फ्रॉम सम अननोन पर्सन, ठीक है। सो क्वेश्चन था क्या, पहले ये देखो।
So basically there is a train and that is moving along a straight line with a constant acceleration. एक हमारे पास ट्रेन है, constant acceleration A से आगे की तरफ जा रहा है. There is a boy standing in the train, throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. ठीक है. अब यहाँ से एक पर्सन है, इस बॉल को ऐसे फेंका और 10 मीटर के स्पीड से, एंगल कितना लिया, 60 डिग्री का एंगल लिया. सो सिंपली लाइक प्रोजेक्टाइल इट्स थ्रोइंग. डन है. The boy has to move forward by this meter inside the train to catch the ball back at the initial height. अब देखो होगा क्या, सपोज कर लो एट टाइम t equal to 0 the person is throwing the ball. Done है. And at the same time, this train must be having certain velocity. So let's say at that point of time, train was having a speed or velocity equal to u. ठीक है, स्पीड हमने u मान लिया. अब देखो at any time greater than 0 second, what will happen? Ball will be in air. है ना, बॉल ऐसे ऐसे अपना ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट कर रहा होगा. एंड व्हेन दिस इज इन एयर, दिस इज नॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ ट्रेन्स एक्सेलरेशन और एनीथिंग. It is free in air. Done it. And acceleration acting will be due to gravity in the downward sense. Something like this. Okay. So it is moving, and it will land somewhere here, let's say. Done. And during this time, what is happening? Train is also moving forward. So let's say the range of this projectile is r. डन है. सो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पर्सन यहाँ था, उसने थ्रो किया. डन है. अगर ट्रेन रेस्ट में होता तो हाउ मच डिस्टेंस ही वाज रिक्वायर्ड टू रन in order to catch the ball? So if train was in rest, then definitely he or she should run forward by distance equal to the range. ठीक है, रेंज के बराबर वो दौड़ता. लेकिन अभी उसको हेल्प कौन कर रहा है? ट्रेन. क्योंकि t इक्वल टू 0 पे द पर्सन वाज एट दिस पोजीशन ऑफ द ट्रेन. राइट, ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड. डन है. ट्रेन भी बाहर आगे की तरफ जा रहा है. सो बॉल जब आगे की तरफ जा रहा है, ट्रेन भी आगे की तरफ जा रहा है. सो ट्रेन कैरीड द पर्सन समवॉट फॉरवर्ड. सो कुछ डिस्टेंस तो फॉरवर्ड कैरी किया, लेट्स से x डिस्टेंस कैरी किया. ठीक है. एंड आफ्टर दैट अगेन he was required to run by 1.15 meter extra. It means distance getting carried by train, that is x plus 1.15 will be equal to what? It will be equal to range. ठीक है. अब हमें निकालना क्या क्या है? निकालना है रेंज और निकालना है x. x आप कैसे निकालोगे? मैंने ये बोला लेट्स से इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u. तो आप x को क्या लिखोगे? x को लिखोगे ट्रेन कितना डिस्टेंस चला उतने टाइम में, कितने टाइम में? टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. बिकॉज व्हेन द बॉल इज लैंडिंग ऑन द ट्रेन सरफेस अगेन, इन व्हाट टाइम इट विल लैंड? इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट. राइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी वी आर हैविंग. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? 2uy/g. डन है. क्लियर है. एंड x will be equal to how much? X is distance covered by train in time equal to time of flight. So ut plus half a t का स्क्वायर. डन है. व्हाट विल बी द रेंज? रेंज आप कैसे निकालते हो? नॉर्मल रेंज तो आप कहोगे मैम फॉर्मूला लिख दो. आप फॉर्मूला होता है 2ux/uy/g. तो फॉर्मूला में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन राइट इट लाइक दिस. बट देर इज वन इशू ये है कि ux को आप u cos 60 सिंपली नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, when the ball is getting thrown, it has a speed 10. Then so this 10 will have a component in vertical sense and component in the horizontal sense. And in horizontal sense, this train has also speed. जैसे I mean velocity of ball being thrown with respect to ground in the y direction. This is definitely how much? 10 sin 60. But velocity of ball with respect to ground in the x-axis will be how much? Because with respect to train, it will be 10 cos 60. ठीक है. तो u ऐड होगा. अगर तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, एक सिंपल सा सिनेरियो देखना. यू आर सिटिंग इन अ कार. ठीक है. कार ऐसे आगे की तरफ जा रही है एंड यू हैव अ स्टोन इन योर हैंड. व्हेन यू थ्रो द स्टोन आउट ऑफ योर विंडो, look at the trajectory of that stone. You are simply dropping the stone like this.
लेकिन क्या स्टोन ऐसे सिंपली गिर जाता है? नहीं, वो ऐसे गिरता है। वो ऐसे क्यों गिर रहा है? क्योंकि दैट कार वाज हैविंग स्पीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस स्टोन कैरीड द वेलोसिटी ऑफ कार विथ इटसेल्फ एंड देन इट केम आउट। तो शॉर्ट में ये याद रखना कि जब भी you are throwing something from a system which is already moving, then it will carry its velocity. And since this train has a velocity in the forward direction, uh, this ball in the forward direction will have how much velocity? It will have velocity equal to u plus 5, not only 5. ठीक है? Everyone agree up to this point? किसी को डाउट है conceptually? Yes, क्लियर है ना? चलो, अगर डाउट होगा तो मुझे बताना। अब चलो मैं कैलकुलेशन पे ले जाती हूँ, क्योंकि करने मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया तुम्हें। सो लेट्स से हियर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा तुम्हें? 2u साइन थीटा बाई जी। सो 2u था इतना, थीटा था 60, सो साइन 60 √3/2 सो दैट इज √3। अब रेंज क्या होता है तुम्हारा? रेंज होता है स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो स्पीड u+5, वाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √3। तो u+5 √3 -1.15 विल बी इक्वल टू x, क्योंकि हमने क्या लिखा था? अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने लिखा था x प्लस 1.15, x प्लस 1.15, 1 देखो मेरा दिमाग बहुत खराब चलता है, आई एम रियली सॉरी। 1.15 लिखना है, मैं 1 को इधर लिख रही हूँ। आई कैन डू वंडर, आई नो। 1.15 दिस इज इक्वल टू आर। तो देखो यहाँ पे मैंने रेंज लिखा ना, दिस इज योर एक्स राइट। यू आई मीन रेंज क्या होगा? एक्स क्या होगा तुम्हारा? एक्स था स्पीड ऑफ ट्रेन, यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम, तो √3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस प्लस 1.15 इज इक्वल टू रेंज। सेम थिंग आई हैव डन हियर। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है? सो शुड आई मैम सॉल्व इट? मैम जी को 10 लेना सही है, गिवन नहीं है। हाँ, जी को 10 लेना सही है। क्यों सही है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजेंटल है ना? नहीं मतलब ट्रेन, मैं 9.8 और 10 की बात कर रहा था। हाँ ले सकते हैं। मैम मैंने अच्छा बहुत बार यहाँ पे करा है, 9.8 से गलत वो 10 से गलत हो देखो, जाता है, 9.8 ले लेते हैं वो सॉल्व करते करते। नहीं, अगर अगर तुम्हारा 9.8, मैं तो ये कहूंगी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी 10 है तभी 10 लो, अदरवाइज 9.8 लेकर मैम चलो। इसमें था नहीं, हाँ, इसमें था नहीं, तो मैंने बट लिया ही स्टिल आई नहीं, एम टेकिंग। कैलकुलेशन बेकार चली गई इसलिए मैं करा ही नहीं। ओ, दैट इज सॉरी, है ना? बट मैं एक्चुअली 10 लेकर चलती हूँ, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आएगा। बट अभी के मैम क्वेश्चन में दिया होता है, इट विल बी रिटन, है ना? रिसेंट में तो मैंने देखा है, पहले का क्वेश्चन है, लिखा हुआ नहीं है। बट जी 10 लेकर चल सकते हैं यार, मैम वी हो विल गए हैं गेट। मेरे गलत बहुत। हाँ। 9.8 ले लेते हैं, वो सॉल्यूशन में गलत हो जाते हैं, न्यूमेरिकल तो खासकर। तुम क्या कहना चाह रहे हो? फिर कंफ्यूजन क्या है ये बताओ मुझे। मतलब मुझे ये था मतलब कि 9.8 लेनी चाहिए थी इसमें, न्यूमेरिकल के अंदर 9.8 लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं 10 लेने से, गिवन नहीं था। ओके, तो यार मैं तो 10 लेकर चलती हूँ अक्सर, जब तक मुझे 9.8 लिखा ना दिखे। सो आई देन टेक 10। So that is my observation. I mean, if it is 9.8 written, then only, otherwise 10. तो 10 लेकर चलो। मुझे क्वेश्चन भेजना एक बार जो तुम्हारे गलत हुए हैं। जी मैम पक्का, अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, डन डन डन, श्योर भेजना। ठीक है? मैम एक्स यहाँ पे प्लस 1.1, मैम एक्स प्लस 1.15 आर कैसे है मैम? अच्छा, वो कैसे आया? आया ना, देखो मैंने ये बोला कि जैसे देखो, यहाँ से तुमने फेंका, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, डन है? यहाँ से तुमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये यहाँ तक गया। सपोज कर लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो एंड यू आर थ्रोइंग अ बॉल एंड यू हैव टू कैच इट। बाय व्हाट डिस्टेंस यू विल रन? कितने डिस्टेंस से रेंज, दौड़ोगे? रेंज के रेंज बराबर से दौड़ोगे। लेकिन सपोज कर लो कोई एक सुपरमैन है,
ठीक है, या फिर कोई एक एक्स्ट्रा सुपरमैन है जो कि इस पर्सन को कैरी कर रहा है, ठीक है, और उसको दौड़ा कर ले जा रहा है, लेकिन वो उसको आर तक नहीं दौड़ा कर ले जा पाया, वो उसको सर्टेन डिस्टेंस तक ले जा पाया, तो सपोज एक्स तक लेकर जाए गया, लेकिन उसके बाद सुपरमैन भाग गया। अब क्या है, अब उस पर्सन को खुद चलना है। तो खुद कितना, मेरे क्वेश्चन में बोला है खुद वो चला 1.15, यानी कि एक्स तो सुपरमैन लेकर आया उसको, और 1.15 वो खुद चला। तो ये दोनों मिलके किसके बराबर हुआ, रेंज के बराबर हुआ। एंड हियर दैट सुपरमैन और सुपर वुमेन वट एवर इट इज योर ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर है ना पर्सन, ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग। सो सॉर्ट ऑफ ट्रेन के अंदर अगर तुम देखो तो ये हवा में है, जा रहा है, ये जैसे जैसे आगे जा रहा है, यहाँ वाला जो सरफेस था वो भी आगे जा रहा है ना, दैट इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज यस ट्रेन मैम, इज। समझ गया। हाँ, सो इसलिए ये ऐसा हुआ था। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे हॉरिजेंटल स्पीड को हमें यू कॉस 60 + 5 लेना था। यहाँ पे तुम लोग एक क्वेश्चन और मुझसे पूछ सकते थे कि मैम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है, तो रेंज जब आप निकाल रहे हो, व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी सिस्टम का एक्सेलरेशन हो, उस उस सिस्टम से whenever you're throwing something it won't carry the acceleration of system, क्योंकि acceleration has to do something with the force। और जैसे ही इसने सिस्टम को छोड़ दिया, जैसे ये बॉल हवा में है, तो फोर्स इज नॉट एक्टिंग, राइट। सो एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता, वेलोसिटी इनिशियली कैरी हुआ, देन जब तक वो टच में था। तो कब तक टच में था, द मोमेंट यू वर थ्रोइंग इट। सो दैट इज why we have not taken total time we have taken, टोटल टाइम ही तो लिया ना। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लिया हमने, उतने ही टाइम में तो बॉल गिर जाएगा ना, उसी टाइम में तुम्हें कैच कर लेना है ना। बॉल कब गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाले टाइम में गिर जाएगा, यानी कि उतने ही टाइम में जितना ट्रेन आगे चला वो कंसीडर करना है, डन है। और इसलिए यहाँ पे मैंने जब एक्स निकाल रही थी तो टी को मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रखा है, बिकॉज इन दैट टाइम बॉल इज ड्रॉपिंग डाउन एंड इन द सेम टाइम यू हैव टू सी हाउ मच फॉरवर्ड ट्रेन कैरीड द पर्सन, डन है। सो टोटल ही दिया ना। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो आपने लास्ट में क्वेश्चन बनाई है हमें इसी को सॉल्व करना है ना। हाँ हाँ हाँ, सो मैम इसमें एक अननोन जो है हमारे पास वो यू है एंड दूसरा अननोन ए है। कट जाएगा ना, यू देखो कट रहा है, यू रूट थ्री कट रहा दिख रहा अच्छा ओके मैम। है ना, कट जाएगा। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर दूं। यू रूट थ्री है यहाँ पे, +5√3 -1.15 इज इक्वल टू यू रूट थ्री +3a/2। दिस गॉट कैंसिल, यू सिंपली कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर ए का वैल्यू। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
Okay. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा प्रगति। ओह गॉड, क्यों नहीं आ रहा बताओ। 5√3 को तुमने कितना लिखा? चलो मैं कैलकुलेटर पे कर देती हूँ फास्ट। ये है तुम्हारा 8.66 माइनस 1.15 इज इक्वल टू 3/2a। 7.51 इक्वल टू 3/2a। अब आप इसको सॉल्व कर लो। एक सेकेंड। ये तो आ रहा है तुम्हारा 15 के नियर अबाउट। सो 15/3 5 ही तो आ रहा। प्रगति, आंसर तो आएगा। सही से किया नहीं तुमने। एक बार और चेक करो। हाँ, मीन्स इंटीजर में आंसर लिखना था ना। हाँ एवरीवन, मुझे भी लास्ट तक आंसर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आई विल सॉल्व एवरीथिंग, डोंट वरी। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम चलेगा नहीं, लास्ट तक आंसर तो आना चाहिए ना। कैलकुलेशन शुड बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू प्रगति। एवरीवन गॉट अप टू दिस थिंग? चलो ठीक है, टाइम कम बचा है, सो आई शुड डिस्कस, आई फील, है ना। राम, आई विल सेंड द क्लास नोट्स, सॉरी, इन योर ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, जो भी आपका ग्रुप है ना उसमें ही मैं सेंड कर दूंगी, जस्ट इन 5 or 10 minutes, डोंट वरी। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से और प्यार से पढ़ना है। देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए फिक्स्ड एट द पॉइंट। इस ऑब्जेक्ट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स एंड वाई। एक्स इज 3 मीटर, वाई इज 1.25 मीटर। ठीक है, एंड दिस इज रेस्टिंग ऑन ए प्लैंक। डन है। द प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग एट टाइम t इक्वल टू 0 along the positive x direction। सो ये इस लाइन के along मूव करेगा। ठीक है, सीधा ही जा रहा है वो। With acceleration how much? 1.5 meter per second. And at t equal to 0, this plank starts moving. At the same time, another phenomena also happens, and that is what? We are throwing a stone from the origin with velocity u as shown in the diagram. So हमने इसको ऐसे फेंका। Suppose ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, और कहीं ना कहीं इसको हिट करेगा, है ना। प्लैंक को हिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो a stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion, इसलिए मैंने ऐसा बनाया, and at an angle of 45 degree to the horizontal। और जब ये हिट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाया है? 45 डिग्री। ऑल द मोशन आर इन द एक्स वाई प्लेन, फाइंड यू एंड टाइम। यू निकालना है, यानी कि कितने स्पीड से हमने स्टोन को फेंका था एंड कितने टाइम के बाद हिट किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें निकालना है पहला टाइम। टाइम का क्या मतलब है? जितना टाइम, वट एवर टाइम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल हैज टेकन टू रीच अप टू दिस पॉइंट। सो लेट्स से इट टुक टी टाइम, and in that t time how much it covered along the x axis and along the y axis. So since this plank is maintained at the same y coordinate, है ना, y coordinate will remain same, only its x coordinate is going to change, so that is 1.25। यानी कि displacement of a stone in the y direction
at that particular point of time is how much? 1.25. First thing. सेकेंड थिंग, एक्स डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो कितना होगा? यहां से यहां तक है 3 मीटर, यहां से यहां तक क्या है? 3 मीटर, और प्लैंक चला है यहां से आगे विथ व्हाट? विथ एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? सो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इस टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, टी टाइम पे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सो 3 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैंक कितना होगा? एस इक्वल टू इनिशियल स्पीड ऑफ प्लैंक इज 0 बिकॉज इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, a is 1.15, so simply half a t square. This is x. Also x can be written in terms of ये इक्वेशन को हम प्रोजेक्टाइल के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, x इक्वल टू क्या लिखोगे? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल हवा में होता है ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो x इक्वल टू आप क्या लिखोगे? u t लिखोगे, यानी कि u cos थीटा t। देन वी हैव 3 इक्वेशंस, और यही 3 इक्वेशंस को हमें जगल करना है टू कैलकुलेट टाइम। अनदर थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दैट? u। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, यानी कि यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो भी हो, वर्टिकल वेलोसिटी जो भी हो, उन दोनों को अगर आप उन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हो, यानी कि tan 45 निकालते हो, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी आर सेम एट दिस पॉइंट, राइट? इस पॉइंट पे दोनों ही क्या है? सेम। सो दिस थिंग ऑल्सो वी कैन यूज। अब देखो, कैलकुलेशन में तुम लोगों को मैं लेकर चलती हूँ। सो व्हाट आई डिड इज, पहले जो हमने किया था 1.25, जो y डायरेक्शन में y का वैल्यू इतना था, दैट इज u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो अगर आप पुट करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन, राइट? उसके बाद 3 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस तुम्हारा x है, एक्स कोऑर्डिनेट था उस पॉइंट का, और उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट u cos थीटा t के बराबर ही था। सो दिस 2 पॉइंट्स आर व्हाट? इक्वल। दिस 2 पॉइंट्स आर व्हाट? इक्वल। डन है? तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गया। अब देखो, ये यहाँ पे ये करना सिग्निफिकेंट क्यों होगा? क्योंकि व्हेन यू विल डिवाइड इक्वेशन 1/2, u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है? एंड जस्ट सी हियर, आई मीन उससे भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज थीटा, थीटा इज नॉट 45 डिग्री, ये वाला हमारा एंगल थीटा है। सो हाउ वी कैन सॉल्व इट? वी कैन यूज अनदर इंफॉर्मेशन, वो था तुम्हारा 45 डिग्री का। सो अगर यहाँ पे आप tan 45 करते हो ना, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा यू एक्स क्या है? यू एक्स स्टिल यू cos थीटा होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता। व्हाट विल बी योर यू वाई? यू वाई विल बी योर v इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v here will be in y direction, uy, that is u sin theta minus gt। So यहाँ पे मैंने लिख दिया u sin theta minus gt, ठीक है? यहाँ से हम लोग अगेन क्या निकाल सकते हैं? u cos theta, ठीक है? सो u cos theta तुम्हारा कितना आया? u sin theta minus 10t। अगेन बी केयरफुल विद द एंगल, दिस एंगल इज नॉट 45 डिग्री, दिस इज माइनस 45 डिग्री, because its since is in downward direction, right? So minus 45 लिखोगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि tan minus 45 is -1। So if you do this thing, I have multiplied this with time, you will be getting certain answer like this। इस इक्वेशन का क्या यूज है? अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ो तो u sin थीटा t प्लस u cos थीटा t। अगेन दिस इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन आई वुड से, बट दिस इज व्हाट जेईई एडवांस इज ऑल अबाउट। अगर तुम्हें वहां पे स्ट्राइक करता है चीजें, यू डू इट, अगर स्ट्राइक नहीं करता यू लिव इट, आई वुड से। बट क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन में लिखना बहुत आसान है चीजें, डन है? बट एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप तक कैसे पहुंचना है वो मुश्किल दिख रहा है, राइट? सो हमने इक्वेशंस लिखा 1 एंड 2, tan 45 को भी यूज किया, वी आर गेटिंग दिस। लेट्स से दिस इज थर्ड इक्वेशन, 1 और 2 को आप ऐड कर दो। सो u sin थीटा t प्लस u cos थीटा t कितना मिलेगा? 1.25 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 0.75t स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है? सो ये इसके बराबर आया।
यू कॉस थीटा टी प्लस यू साइन थीटा टी, 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया, और ये ऑलरेडी किसके बराबर है, 10t² के बराबर है, आप इसको इक्वेट कर दो, ठीक है, यू विल गेट टाइम 1 सेकेंड, कैलकुलेशन इज इजी, कट गया यहाँ से, 1 सेकेंड आएगा। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट स्पीड। सो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, यू साइन थीटा, और आई मीन फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस वन, हाउ वी आर गेटिंग दिस एनी, चलो तुम लोग सजेस्ट करो मुझे, मैं बहुत फिर बोलती जा रही हूँ, you should have idea of ki from where it is coming. How u sin theta is this much? Let me take back to the question. हाँ बताओ u कैसे निकालोगे? Okay, time is already up. I'm sorry. एक काम करती हूँ, I will solve all the questions with proper explanation given. I will discuss everything over there and then I will send the notes in the group. ठीक है, बट मीन टाइम में तुम लोग ये सोचो कि u का वैल्यू कैसे आया, t तो हमें निकल जाएगा, u कैसे निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, somebody else must be waiting to take the class. I'm really sorry, I need to end the class over here. Sorry. Yes, anyone having anything to say? You have to think upon how you will be calculating u, ठीक है, so that's your task. Should I leave? मैम 230 से है वो क्लास। अच्छा, नेक्स्ट 2:30 पे है। आर यू श्योर? यस मैम। ओके यस ओके, मैम। ठीक है ठीक है। तो मुझे बताओ यू कैसे आएगा, लेट मी नो एवरीवन, सोच के बताओ, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर। मैम ट्रॉली हाँ, मतलब वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में कहाँ तक पहुंचेगा वो देख लेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एंड हम्म, जो यू वाले का एक्स कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देंगे। मैं समझी नहीं क्या कह रहे हो। मैम जैसे जो ट्रॉली है ना उसका हम पहले वो निकाल लेंगे, उस एक्सेलरेशन और वो यूज करके कि वो हाँ, एक्सेलरेशन निकाल, हाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने। हाँ हाँ, और जैसे देखो, हाँ एग्जैक्टली हमारे पास टाइम ऑलरेडी आ गया ना, 1 सेकेंड। सो अब आप इक्वेशन में यूज कर लो, जैसे यहाँ पे अगर आप 1 सेकेंड रखोगे यू विल गेट यू कॉस थीटा, राइट। यहाँ पे टाइम का सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं लगाना, डोंट गो इनटू कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा और भी ज्यादा, करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, टाइम मिल गया ना तुम्हें 1 सेकेंड, सो यहाँ पे t का वैल्यू 1 सेकेंड रखो, यू कॉस थीटा विल बी हाउ मच। अगर पहला इक्वेशन आप यूज करते हो, लेट मी गो बैक, कितना है ये देखो, 3 प्लस हाफ 1.5 t² इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। सो यहाँ से टाइम का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, 1 सेकेंड। सो 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। सो यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3.75। 3.75 आ गया यू कॉस थीटा। कैन वी कैलकुलेट यू साइन थीटा? सिमिलरली यहाँ से यू साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, यहाँ से u साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1.25 प्लस 5, सो दैट इज 6.25, राइट। सो u साइन थीटा इज इक्वल टू 6.25, हमें निकालना है u। सो u हम कैसे निकालेंगे, जैसे इस पॉइंट से हमने फेंका था, इसका स्पीड था u, वो बट गया था दो कंपोनेंट में, एक था u cos थीटा, अनदर वन वाज u sin theta. So if you have to calculate u, use the vector. स्क्वायर I mean, करके ऐड कर देंगे। yes. तो u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज नॉट रियली डिफिकल्ट, बट हाउ यू विल प्रोसीड वाज अ फैक्टर। डन है। सो ये सबसे मैम पहले तो मेंस का क्वेश्चन है। नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली दिस इज कंफ्यूजिंग, ये एडवांस का क्वेश्चन है। सो एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी, जब तुम लोगों को समझ में ना आए प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले इक्वेशन सारा लिख कर देख लो, जितने भी इक्वेशन आ रहे हैं ना लिख कर देख लो, फिर सारे लिखे हुए इक्वेशन को गौर से देखो कि कहाँ पे क्या क्लैरिटी बैठ रहा है, देन ट्राई कैलकुलेटिंग, है ना। क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन दिखते ही नहीं दिखता कि कैसे सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं दिखता, जैसे इस केस में। बट इफ यू आर राइटिंग ऑल द इक्वेशंस,
लुक एट दैट केयरफुली, कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, कहाँ कैसे करना है, देन यू कैन थिंक ऑफ इट। और ये सोच भी तब आएगी व्हेन यू आर सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाट something important. Sorry, I'm really getting call from my team. Maybe they are waiting. I don't know. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लेट मी शो यू एटलीस्ट। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। कितने लोगों ने किया था ये क्वेश्चन? किसी ने किया था क्या? अगेन यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड दिस इज रिसेंट वन। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है एक्चुअली। ठीक है, तुम लोग ग्रुप में मुझे बताना कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, वट एवर क्वेश्चन आई हैव सेंड। डन है? ठीक है, ओके ओके एवरीवन देन। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लेट मी नो इन बाय द मैम। ग्रुप। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर।